There's a lot of excitement, Murtuza. My last outing in the theatres was Mission Mangal, which did very well. And fingers crossed that people will come into the theatres to watch Neeyat and love it, and maybe watch it again, because you may need to. But no, there's a lot of excitement. प्रमोशंस करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको प्रेशर महसूस नहीं होता. आप इतने थक जाते हैं that there's no time to process what you're feeling, but I'm very excited. And I'm looking forward to seeing how everyone receives the film. Thank you. Yes. What preparation did I do for the role? I think, I sat with, actually we worked remotely. Anu was in London, I was here, but we did a lot of Zoom sessions in preparation for the film to understand the character, as always, and the world and her vision. Were you inspired by any of the detectives that we commonly know? Actually, I've loved this genre. So, right from our homegrown Byomkesh Bakshi and Karamchand to, whether it's Sherlock Holmes or Miss Marple or Hercule Poirot, I've enjoyed all of them and many more. So I'm sure inspiration kahin na kahin se, not directly, but I'm sure it's trickled into. But yes. Trust me, in this, she's not like any detective you've ever seen. I can promise you that. No. Just watch. Now, leading to this question, I have the same thing. Vidya, आपकी कहानी हो या फिर किसी भी तरीके की फिल्म हो. I'll just give you a microphone. आपकी जितनी भी फिल्मों की मैं कहानी की स्पेशली बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को इमोशनली दिखाने की कोशिश की है, हालांकि रोल बहुत स्ट्रांग था. यहाँ पे भी राम जी, आई टोटली एग्री विद यू, आप कहीं से कहीं स्ट्रांग वुमन और एक डिटेक्टिव जैसा तो नहीं लग रही हैं. वो वल्नरेबिलिटी कहाँ से लेकर आती हैं और वो कितना हेल्प करता है आपको इस रोल के लिए? I think more than me, it's a director who makes me do what I do, and therefore I think Anu should answer this question. सब कुछ तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, because the script, the character was very beautifully etched out by Anu. I've only followed her directions, her instructions, and I think अच्छा लगता है जब मौका मिलता है कुछ एक अलग किरदार निभाने का. तो like Ram said, she's not your typical detective, that's what sets her apart. That's what makes her very interesting and exciting for me. But whatever I've done is, if it works, then it's thanks to her. Don't say that. Cancel. आपसे एक सवाल है. जब पूरे OTT जैसी चीज़ें आती हैं आजकल, एक फिल्म दूसरी जगह, दूसरे देश में, सब जगह पर आ रही है, लोगों को बहुत सारे क्लासिक्स देखने की भी आदत पड़ गई है. ऐसे में जब आप नीयत जैसी फिल्म लेकर आते हैं, तो एज अ डायरेक्टर कितना प्रेशर होता है कि भाई इस बार की ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, तो कुछ अलग तो देना पड़ेगा. Yeah, I think it's a good thing, that people are watching different things, and it's exciting and challenging. So, and I've always, like, from the day we started writing, I always imagined it to be in the theaters. It's that kind of a film, when you watch, there is a community viewing, and people gasp at the same time, and aisi film hai, it is that, and usually this genre of films, it's like a puzzle, that you sort of, there is a relationship with the audience. So you kind of, there are expectations, and हर कोई जब ऐसी फिल्म देखता है, everybody thinks हाँ मुझे पता है क्या होने वाला है. There is always that, and you have to have that relationship, but you also have to be one step ahead of them. And this is, I love this genre. मैंने मतलब हर film देखी है. So I kind of, me and my team of writers, we worked really hard in creating something different, and we are aware that there is such quality options available from across the world. And I'm proud that we are at that level. And I really hope that, the audiences sort of see that and enjoy it for, what we've created. Thank you. Hello.
माई नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम फ्रॉम सेजल जैन, दैनिक भास्कर। मेरा प्रश्न है आपसे, विद्या मैम से। आप पिछले 4 सालों से मीडिया और शूट से दूर रही हैं, क्या आप कोई अच्छी स्क्रिप्ट की वेट कर रही थी? नहीं, मैंने 3 फिल्में की है इस दौरान। सारी फिल्में प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई और हमने बहुत प्यार बटोरा इन फिल्मों के लिए। शकुंतला देवी जो मैंने अनु मेनन के साथ की, और फिर शेरनी और जलसा। तो मुझे दुख इस बात की है कि आपने ये फिल्में नहीं देखी है। आज आपका होमवर्क थिएटर पे ही आपकी नहीं थिएटर में। अच्छा। हाँ, वो मेरे हाथ में नहीं था। पैंडेमिक था, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पैंडेमिक होने के बावजूद हमारा काम हम लोगों के साथ शेयर कर पा रहे थे। पर हाँ, अब थिएटर में रिलीज़ करने का मौका मिला और मुझे लगता है नीयत जिस तरह की फिल्म है ना, वो बड़े पर्दे पर देखने का मज़ा ही कुछ और होगा। आपने अब जब ट्रेलर देखा, मुझे खुद लगा कि हालांकि मैंने फिल्म ऑलरेडी देखी है, पर जब बड़े पर्दे पर देखो ना, इसका 4 चांद लग जाते हैं। आपने ग्लैमर्स और घुमराह जैसे कई किरदार किए हैं, तो आपको गुमराह कर दिया उनको। तो आपके कौन से किरदार आपको ज़्यादा मुश्किल लगा है? कौन से फिल्म? आपने ना ग्लैमर्स और गंभीर जैसे किरदार किए हैं, तो आपको कौन सा किरदार ज़्यादा Like मुश्किल serious लगा? roles and glamorous roles. So. अच्छा, ऐसे मुझे मेरा पेट नहीं भरता। मुझे हर टाइप का खाना अच्छा लगता है, वैसे ही हर टाइप का रोल अच्छा लगता है। थैंक यू। हाय, अमित भाटिया फ्रॉम एबीपी न्यूज़। मेरा क्वेश्चन शहाना और निकी से है। फर्स्ट थिंग, आप दोनों के कैरेक्टर के बारे में, एंड सेकंड, जब इतने सारे एक्टर्स होते हैं, स्क्रीन स्पेस कहीं ना कहीं कम होता है, तो उस कम स्क्रीन स्पेस में कैसे खुद को इसमें आपने जस्टिफाई किया? इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, फिल्म तो वही 2-2.5 घंटे की होगी ना। जैसे ये स्टेज हाँ, छोटा है, लेकिन- सब लोग फिट हो गए। लेकिन एक थैंक यू सो Sorry. मच, थैंक यू। इन्होंने मेरा जवाब दे दिया है। I apologize. इस फिल्म में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। इस फिल्म में सबका पार्ट आपके आंसर के लिए बिल्कुल बराबर है। शहाना? यार, ये एक्चुअली फिल्म जो है ना, इट्स ड्रिवन बाय द कैरेक्टर्स। ये अनु की का डिज़ायर भी था कि हर जो कैरेक्टर है वो अजीब गरीब अटपटा सा कैरेक्टर है, तो हर किसी का जो रोल है वो इतना स्पेसिफिक है कि आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं चैलेंज करती हूँ कि आप किसी को भूल जाए इन कैरेक्टर्स में से। तो हमारे लिए भी इट वाज अ वेरी, वैसे भी आई डोंट थिंक जब एक एंसेम्बल करते हैं ना, तो एक दूसरे की ज़रूरत होती है, उसमें कोई इनसिक्योरिटी की बात नहीं होती। सामने वाले का काम अच्छा होगा तभी आप हमको भी याद रखेंगे ना। एक सीन में सिर्फ आप ही अच्छे, बाकी नहीं है, तो फिर आपको क्या याद रहेगा फिल्म के बारे में? सब कैरेक्टर्स, कहानी, एक उसका जो ग्राफ है वो जब अच्छे से बनता है तभी आप भी उभर के निकलते हैं। तो हमारे लिए दिस एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल is what made us be a part of it, and there is no doubt that हम सबका जो किरदार है, हम सबका जो काम है, वो आप बाकायदा एक एक करके आप स्पेशली बात करेंगे उसके बारे में। एक मिनट, आपने 2 गलत नाम ले लिए, निकी वाले और शाहना गोस्वामी। बाकी सबको बाहर फेंक के अपनी स्क्रीन स्पेस लेते हैं इन ऑल देयर प्रोजेक्ट्स। अरे ये लोग नहीं दबते यार, इवन विदाउट वन लाइन दे विल टेक द स्क्रीन। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन जो था ना, वो शायद वो ठीक से समझा नहीं, आंसर नहीं हुआ। बट आई से कि जब टाइम कम होता है, जाहिर है, तो कहीं ना कहीं टाइम कम नहीं है, टाइम कम। पर नहीं, टाइम बहुत कम था, मैं बहुत दुखी हूँ। ये देखिए, राहुल मेरी बात समझ गए। आप फिल्म देखना। Can I explain? yes. Yeah. So I think, when you make an ensemble film, and I think when you get people of this caliber, it is like a dance performance, or it's like an orchestra. So it's like all of them are, when you see an orchestra, somebody is playing the violin, somebody is playing, the piano, somebody is playing. So it is, you have to make that music together. मतलब हर कोई अपना इंस्ट्रूमेंट परफेक्शन के साथ प्ले कर रहा है, बट देन दे ऑल्सो, यू नीड दैट हार्मनी ऑफ एवरीबडी कमिंग टुगेदर. आई थिंक एन ensemble फिल्म इज लाइक दैट. दैट्स व्हाई यू नीड द पीपल हु आर परफेक्ट टू प्ले दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. So that's what it is. So जब when somebody is playing a violin, they're not saying yeah please तू थोड़ा चुप हो जा, like they don't do that ना. So I think that is what is the analogy, and I think the
a perfect ensemble is when everybody gets that space to shine. And I think that's what we've got with the quality of, you know, the talent we have. And I also do think that the way the script is written, everybody gets the time to, you feel for every character. Every character is humanized by the way we've tried to write it and the way the actors have embraced it and enacted it. Thank you so much. Well said. Ma'am, sorry, I'll interrupt you. I think you've switched off the mic. Can I request? On it? हाँ जी. You've taken such exuberant cast, you know. How did you match their energies? Well, I was... यार गलत सवाल पूछ रहे हो यार. गलत है यार. Let me also uncover, ना. स्कॉटलैंड में डांट पड़ती थी, यहाँ भी पड़ेगी यार. आप यहाँ जो देख रहे हो रहा है, जो कोई मौका ही नहीं दे रहा है इनको बात करने का, वही होता था सेट पर. So there's a one-word answer: alcohol. Yeah, during the shoot. In the corner. Okay, Vidya, somebody asked you, you are a good actor, and a star. Which tag do you prefer, actor or a star? The acting star. And finally, a theatrical release, you know, Yes. of Vidya Balan. We've got a lot of expectations. Are you nervous? Yes, a little bit. But I think I always feel, you know, excited and nervous, and I can't tell the difference. It all feels the same to me a few days before release. And Rahul Bose is really distracting me, I have to tell you, ma'am. Please. No. But I think I like the fact that people have expectations from this film, from me. I'm very grateful for that. I'm very hopeful that everyone will enjoy it. Okay, थिएटर पहुंच जाओ बस. नीरज, कभी आपकी नियत क्या थी जब आप नियत से जुड़े? बुरी. Elaborate. जब मैं जुड़ा इससे उस वक्त कोई नियत नहीं थी मेरी, लेकिन जब मेरी बात हुई अनुमनन के साथ और जब किरदार को समझाया गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये करना चाहिए और इसके लिए नियत बदलनी पड़ेगी मेरी. Okay, we have time for one last Nikki, question. Nikki, you fly from UK, right, Nikki? हाँ जी, You yes, I fly do. from UK, right? Yes, thanks to Abundant Share, they have gracefully made me a part of the film and the promotions, and yes, I do fly from UK. But ये फिल्म वहाँ शूट हुई है, तो इस बार ये सब मेरे घर आए हैं. Oh, okay. So you are the most expensive cast? I'd like to think so. Right, thank you, ma'am. Hello, One last question, please. Hello, one last question. Hello. माइक ले लो. मेरा सवाल ये है, मैंने हालांकि मैं आज थोड़े देर से पहुंची हूँ, लेकिन मैंने इसका ट्रेलर देखा है. तो मेरा सवाल ये है कि ये जो आपकी कहानी है, इसमें जो राम जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर है और ऐसे में सीबीआई डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकती है. लेकिन यूजुअली होता ये है कि जो लोकल पुलिस होती है और जो सीआईडी होती है उनकी भी का भी इम्पोर्टेंस होता है. वो लोग भी इन्वेस्टिगेशन में आते हैं और फिर सीबीआई आती है. तो क्या इसमें लोकल पुलिस स्टेशन और जो ये है सीआईडी है उसका भी इम्पोर्टेंस है कि सिर्फ सीबीआई का? Well, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. नहीं, but सब चीज justified है. Everything is justified. There is a reason why everything happens. मतलब it's not an illogical decision, ऐसा नहीं है. There is a reason why it works, and I've lived in UK for 20 years, so I do understand what happens. It's research. पर मैं और कुछ नहीं बता सकती. पर आप जब फिल्म देखेंगे आपको सब समझ आ जाएगा. Hi, you're hi. This is Asta from Awesome TV. I must say that the trailer looks amazing. Simply awesome, I must say. And my question is to Prajakta. How was Prajakta, how was your experience working with such an incredible star cast? And we want to know one memory, anything, any fun memory you would like to share.
it was mad. I mean, look at everybody. This is jo energy abhi hai. It was 10 times more, and we were away from home, so we were all chilling together before shoot, during, after. It was really really fun. And I think Vidya and I were discussing this. That what are the chances कि इतने सारे लोग मिले and we got along also together. So I was very happy that I got to be a part of this. Honestly, when I had my first call with Anu about the film, when I heard everyone who's in the film, I thought, even if this is a room that, you know, even if you're just a fly on the wall, it's fine. You want to be in this room. So I was very grateful that I got to do this. And a memory, I think the one day I'll never forget is when we were shooting in Scotland outdoors. We're shooting on this one cliff, ki AK, and then everybody runs up the cliff, and then cut, reset, and then everybody's walking, and it's freezing. It was windy. I don't know how the cameras were also standing up because everything was everywhere. We only know how we've shot that. And then end में ऐसे हो गया था because we didn't have any jackets उतने, तो हम सारे huddle करके ना ज़मीन पे बैठ जाते थे so that we can block each other's winds. But that just sounded wrong. But it sounded sensational. Let's call it that. We got the video. We got it right. That's a memory. I have a feeling that अगर आपने 2-4 सवाल और पूछ लिए तो ये mystery यहीं पे decode हो I जाएगी. have one last question which I'm sure all of them can answer if I can be allowed. एक सेकंड. क्या हो गया? Hello, one last question. एक सेकंड. टॉस करते हैं पहले. हाँ जी पहले. I have a question which I hope everyone in the cast can answer. Their favorite fictitious detective. Of course, after July 7, it will be Vidya Balan. But now it is Vidya Balan. अभी भी वही है. अभी भी है. But post the theatrical release, of course, like she'll be everyone's universal favorite detective. But in fiction or wherever, in books or films, everyone's favorite detective. I'll start, Agatha Christie. Feluda. She's a writer. Like a character. The character. Chata Chaudhary. Oh. Byomkesh Bakshi. इन्होंने सवाल अच्छा पूछा, सबको इन्वॉल्व कर लिया. Huh? Yeah, I didn't do. That's mine too. Yeah. Yeah, Sherlock Holmes. For me, Sherlock Holmes. And that's one person who's as quirky as her character.